everyone. Welcome. Today, we'll be talking about unlocking the mysteries of Mahashivaratri, celebration, legends, and puja guide. This is part two of the conversation that we started last week. Join us on a captivating journey into the heart of Mahashivaratri, the divine celebration honoring Lord Shiv, from unraveling ancient legends to discovering global observances and mastering the sacred rituals of puja. This video is your ultimate guide to experiencing the magic of Shiva's night. Welcome to our channel, where spirituality meets education. In this enlightening video, we delve deep into the essence of Mahashivaratri, the auspicious Hindu festival dedicated to Lord Shiva, embark on a cultural expedition as we explore the significance of this sacred occasion across different corners of the globe. Drawing from the timeless wisdom of the Shiv Puran, we unearth mesmerizing tales that reveal the divine attributes and cosmic significance of Lord Shiva. Discover the legends behind Mahashivaratri, from the churning of the ocean of milk to the marriage of Shiva and Parvati, each story weaving a rich tapestry of religion and spirituality. But our journey doesn't end there. Prepare to immerse yourself in the art of Shiva worship as we provide a comprehensive guide to performing the puja with reverence and authenticity. Whether you're a seasoned devotee or a curious seeker, our step by step instructions will empower you to connect with Shiva's divine energy and experience profound spiritual upliftment. Join us as we unlock the mysteries of Mahashivaratri, bridging ancient wisdom with modern understanding and igniting a deeper appreciation for the timeless legacy of Lord Shiva. Don't miss out on this transformative experience. Hit play now and embark on a journey of enlightenment and devotion. Let's invite Pandit Mahesh Shastri ji. प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो श्रुति जी? बहुत अच्छे। तो महेश जी, आज बात करेंगे महाशिवरात्रि पार्ट 2, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो कन्वर्सेशन शुरू किया बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग था। बट Almost 2 hours. यस, एंड देन वी हैड टू ब्रेक इट डाउन इन 2 पार्ट्स बिकॉज़ शिव जी के बारे में जितना ही बात करो कम है। तो लास्ट टाइम मैं दर्शकों को याद दिला दूँ कि हमने शिव जी के बारे में बात की थी, कैसे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक है। उनका क्या सिग्निफिकेंस रहा है पौराणिक कथाओं में, उनके बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने जो ओशन चर्निंग है, समुद्र मंथन, उसके बारे में बात की थी, कैसे वो पॉइज़न पी गए थे तभी। वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ एंड आल्सो महाशिवरात्रि की जो कहानी है, वो भी हमने लास्ट टाइम सुनी थी, पुराणों के बारे में सुना था, कि कैसे वो पुराण दे आर ब्रोकन डाउन इंटू डिफरेंट संहिताज़, और एक-एक संहिता के बारे में भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो इस बार हम और भी शिव जी के इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे अ, वो उनका और शक्ति का सिग्निफिकेंस क्या है? हम देखेंगे कि गंगा कैसे लिंक होती है शिव जी के साथ, कैसे उनका ओरिजिन हुआ इंडिया में। शिव जी के थर्ड आई के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो एंड देन आल्सो विल एंड द कन्वर्सेशन विद ये पूजा महाशिवरात्रि की जो है वो कैसे करनी है। विल टेक लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एज़ वेल। तो सारे दर्शकों को मैं बता दूँ कि प्लीज़ आप क्वेश्चंस पूछते रहे कमेंट्स में। हम सबके सवाल लेंगे, शायद थोड़ा एंड में लेंगे, बट लेंगे ज़रूर, किसी को भी हम मिस नहीं करेंगे। तो पंडित जी, शुरू करते हैं आज के कन्वर्सेशन के बारे में। पहले तो एज़ ओम यूजुअल नमः शिवाय। जी, ओम नमः शिवाय। और हमें शुरू करना है पहले शिव जी के ये मंत्र से। तो मैं अपनी शेयर करूँ स्क्रीन? जी, और अगर आप हेल्प करें। हाँ। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं
जगदीश्वरं मृगछाल अंग सुशोभितं करमालदण्ड विराजितं यमकालपाशविमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं गले रुण्डमाल कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरम तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं हे दक्ष यज्ञ विनाशकं हे काम दहन कारणं हे गणेश स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयं तव पाद कमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी, तो आज की शुरुआत जो है वो करते हैं शिव जी ने जो उनकी जो गंगा के साथ लिंक है उसके बारे में बात करते हैं। उनको क्यों हम गंगाधर कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली इट्स अ हिस्ट्री। क्योंकि सी द रीजन इज आई एम गोइंग टू यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मिक्सचर, सो अवर व्यूअर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका कैन ऑल्सो एंजॉय and people from South India also can enjoy. So the story begins with King Sagar. So King Sagara is really good king, and he was ancestor of King Bhagiratha. So who now King Sagar want to perform Ashwamedh Yajna to establish his supremacy, like so, however, during the Yajna, Ashwamedh Yajna was stolen by God Indra. Now we have seen like Indra has like always people blame Indra. Indra stole this. Indra stole that. So Indriya, like we have looked at the last one, stream, and the one at the Adi, at the Adhyatmic level, it's all same. There is no difference. जी, And Indra described in Veda is also like is Lord Shiva, Lord Vishnu. There is no difference between it. So the Vedic Indra is very nice, like supreme God. And but the one when we look at Purana, it is just the position. It is the king of the gods. Okay, जी। जैसे so टाइटल है कोई, it's a टाइटन है। title. It's a title. जी, So he thought like if he does completes Ashwamedh Yajna, so what will happen is his Indrasan will be in jeopardy. He can become Indra. जी, So he did a trick. So he stole the horse, and then what he did was he hid it in the hermitage in the ashram of sage Kapil. कपिल मुनि के आश्रम में उसको छिपा दिया ना। बात कपिल मुनि कोई ऑर्डिनरी ऋषि नहीं है। विष्णु के जो 24 जो वैसे तो प्रमुख 10 अवतार है, मगर 24 अवतार काफी वो इसके लिए कहते हैं ना, ओम नमो सुनंताय सहस्र मूर्तये सहस्रपादाक्षिरूपाय सहस्र नामने पुरुषा शाश्वते सहस्र कोटि गोदारिणे नमः। सो वो काफी है ना। तो उनके एक अवतार में से ये कपिल मुनि का नाम है। वो सांख्य शास्त्र जैसे भगवत गीता में अध्याय 2 जो है ना, सांख्य शास्त्र के ऊपर है। वो हुँ, सांख्य शास्त्र के वो गुरु हैं। ओके, वो उन्होंने उनमें वो ही इज अ ग्रेट सेज इन सांख्य शास्त्र। सो वो वहां पे साधना कर रहे थे। तो अभी अश्वमेध यज्ञ जब तक पूरा नहीं होता, जब तक वो अश्व मिल नहीं जाए, कोई
को जिसे ने भी ले लिया है ना, उसके साथ में युद्ध करना पड़ता है। ओके। नाउ क्या हुआ ना कि सगर राजा के जो पुत्र थे, उसमें जो प्रमुख पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था, सो he and his army, all of his sons were searching for the horse. So they eventually found it near Kapila's Muni's ashram, inside the ashram somewhere. So where it was standing next to sage Kapila Muni, who was doing meditation, जी in deep meditation. Now, whenever this gives us one lesson to everybody, whenever you see something, you are missing something, and you find it somewhere in someone's room, don't blame them that they stole it. Okay. जी। uh, अज़्यूम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ही किया है। उन्होंने ही किया है. So जी, the what happened was all of the sons led by Sagara's son, led by uh, the Mr. Anshuman जो थे ना, उनके जो मेन पुत्र अंशुमान. So जी, what he did was he accused him. He thought he is the thief and he stole the horse. Now Kapil Muni, he was in deep meditation. So when he opened his eyes, जैसे आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी, you must have heard the story in Mahabharata, like Gandhari told Duryodhan to come without any clothes. So because she hasn't opened her eyes in a long time, so her eyes has a like lot of power. So when she opens up, if she desires, like so with her desire was to make Duryodhan's body like iron, nothing can break it. जी, But Krishna played a trick there, right? जी, So likewise, sage Kapila was in deep meditation, and he was disturbed by some whoever was accusing him. So he opened his eyes, so fire came out of his eyes, and that burned all of Sagar Raja's son. Sagar Raja के सारे पुत्र भस्मीभूत हो भस्म गए हो to गया। ashes. हुँ, Now King Sagar became sad, right? And definitely, like anybody would get sad, right? जी, For loss of his son. So he went to sage Vasishta, and then who suggested अभी उनकी मुक्ति जो मोक्ष स्वर्ग में तभी जा सकते हैं if रिवर गंगा जो स्वर्ग में है, वैकुंठ लोक में है, विष्णु के पैर के नीचे, अगर वो पृथ्वी पे आ जाए जी, तो उसके पावन जल से आपके पुत्रों का मोक्ष हो सकता है. ओके, अभी गंगा ऊपर लाना है जमीन पर, धरती पे। वो कितना भागीरथ, वो काफी डिफिकल्ट काम है ना. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो इसके लिए हम जो भी कोई डिफिकल्ट काम है ना, उसको हम भगीरथ कहते हैं ना, कि भगीरथ कार्य है. जी, बिकॉज क्या है ना कि उसमें सगर राजा के एक पौत्र थे जिसका नाम भगीरथ था. सो ही रिजॉल्व टू ब्रिंग गंगा डाउन टू अर्थ. फॉर दैट ही हैड टू डू 1,000 years ऑफ तपश्चर्या. ओके, Okay, so he took severe penance and austerities to please Brahma. जी, ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए, the creator, and with his devotion he granted the boon. But या he put bold letters, quote, unquote, underline, saying that गंगा तो आएगी पृथ्वी पे, मगर वो आएगी ना तो पृथ्वी समाप्त होगी. जी, बिकॉज डिस्क्लेमर दे if दिया you उन्होंने। because if you drop something from here, like जी, if I drop something like this on up here, जी, it will have some impact. But if I drop from the 10th floor, it will have a major impact. But if the same water like comes from heaven, like from like it will have a higher impact. So it will destroy pretty much everything. And जी, to prevent Ganga's force from wreaking havoc on earth, they all went to Lord Shiva, भागीरथ. जी, सो गंगा को पृथ्वी पे लाने का काम बहुत डिफिकल्ट था. जी, सो इसके लिए जो भी काम डिफिकल्ट होता है ना, उसको हम भगीरथ कार्य कहते हैं, कि वो काफी भगीरथ कार्य. क्यों? कि वो भगीरथ ने स्वर्ग में से गंगा को लाने का काम किया था. ही डिड जी, दैट जॉब. जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टायरसम जॉब है। वेल,
टायरसम तो क्योंकि तपश्चर्या करनी है, जी। और तपश्चर्या भी ऐसे नहीं होती. इफ यू लाइक सीट फॉर 5 मिनट्स, योर माइंड विल वॉन्डर अराउंड. आज क्या खाना बनाना है, बच्चों के लिए क्या करना है, उसने एग्जाम का स्टडी की होगी कि नहीं की होगी, राइट. जी। एंड इवन इफ यू आर यंग, जैसे जो भागीरथ थे उस समय पे, यू विल हैव 1,000 डिफरेंट थॉट्स, कब शादी होगी, कब, सर, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. बट भाग्य वो भी इसके लिए उसको भागीरथ कार्य, और वो भी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न होना, वो भी अलग बात है. प्रसन्न होने के बाद में दूसरा प्रॉब्लम है, जी। उसको जमीन पे कैसे लाए. फोर्स काफी बड़ा है. सो जी। they worship Lord Shiva, all of them, and Shiva agreed, ओके। okay, to bear the extreme force of her descent. गंगा की जो, उन्होंने कहा मैं अपनी जटाओं में बांध दूंगा. और मैंने आपको पिछली श्री में भी बताया था कि शिव जी के जटा में जितने बाल हैं ना, जी। उतना उनको ज्ञान है. जी। और एक बात बहुत सारी बोलिए, जटाएं हैं। बहुत सारी जटाएं हैं उनको, जी। जटा में बाल. और देखो, हमारे तो बाल भी नहीं है. तो उसका मतलब ये नहीं ज्ञान नहीं है, मगर so Shiv ji ke paas, see, the problem with human being is people start to lose hair, especially men, after age of, like, after certain age, जी। so like Shiva don't have that problem, because he doesn't have a body like us. He has a divine body, right? जी। And he has control his senses. That is one of the things. So he जी। said, when Ganga falls on earth, I will take it. I will take the Ganga's force in my head. जी। सोचो, हमारा सर कहीं पे भी लगता है ना वॉल पे, गलती से, अगर आपने बम्बई की सबअर्बन ट्रेन में ट्रेवल किया हो ना, तो कभी कभी ट्रेन फास्ट जाती है ना, कभी इवन कार के अंदर जोर से ब्रेक लगानी पड़ती है, तो पीछे बैठे तो आगे की सीट पे तो थोड़ा बहुत लगता है. कहीं इम्पैक्ट। कहीं होती कि तो मौत भी होती है इसमें. तो ये तो गंगा का फोर्स, वो भी सर के ऊपर, अगर जमीन पे पड़े तो है वो, इट विल क्रिएट रेत, हैवॉक. तो सर पे क्या होगा, मगर ये तो शिव जी है. तो जी। उन्होंने, जब भी गंगा का फोर्स जब भी आया, तो उन्होंने अपने बाल खोल के अंदर गंगा को समा लिया और जी। बांध दिया, स्लोइंग हर डिसेंट, जी। प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन. फिर जी। गंगा माता ने प्रार्थना की, प्रभु हमें जाने दो. भागीरथ ने भी फिर से प्रार्थना की. तो जी। फिर धीरे धीरे से गंगा का जो जल है ना, वो जमीन पे बहने लगा. और जी। तब से आप देखते हो ना, शिव जी के सर से गंगा क्यों बहती है, जी। क्यों, उसी के कारण अब बहती करनी है. रहती है। जी, यहाँ पे मुझे एक सवाल था पंडित जी कि मैं जब भी शिव मंदिर में जाती हूँ तो उनके जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर एक देयर इज़ अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर दैट इज़ यूजुअली इज़ हेल्ड इन अ पॉट और समथिंग लाइक दैट एंड देन इट ड्रॉप्स ड्रिप बाय ड्रिप on Shivalinga. Is that the same significance of this story? जो one of the significance one of one it. of the significance like this. See, the Okay. reason you pour the water is जो हमारा, तो see, like we said in the last stream, right? जी। What does the Shivalinga represent? Shivalinga does not represent what people think. जी। Shivalinga represents the formless Brahman, Infinite. Yeah. फॉर्मलेस इनफाइनाइट ब्रह्मा, पर ब्रह्मा, जो हमारा आत्मा भी है, जी। जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जी। वो सिंबलाइज करता है. Mhm. और हमारा जो शरीर जो है ना, उसको चलाने का काम भी आत्मा का है. जी। उसका काम भी आत्मा का है. और जी। जो पानी, घी, वो सब माया है. जैसे माया लिंग के ऊपर से चली जाती है, और जैसे पानी लिंग के ऊपर से चला जाता है, और लिंग को कोई असर नहीं होता, जी। वैसे भी हम इस शरीर में रहकर, इस शरीर के अंदर, विद इन अवर बॉडी, वी शुड बी डिटैच. दैट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ ऑफरिंग द वाटर. प्लस शिवलिंग इज रिप्रेजेंट, लाइक आपने बम्बई के अंदर ट्रॉम्बे में जो भाभा एटॉमिक सेंटर देखा है ना, वो भी जी। शिवलिंग जैसा ही हो ना ऊपर. सो जी। इट्स सॉर्ट ऑफ, अवर सोल इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर जी। कंटिन्यूअसली.
जी, Nuclear reactor might need a uranium or plutonium rods, but our soul doesn't need. Remember, Shiva is the Paramatma. जी, सो उसके लिए भी पानी डाला जाता है कि थोड़ी शांति रहे। एनर्जी जो है ना उनको शिव जी को, और उन्होंने गले में सर्प भी लिए, वो उन्होंने जहर भी लिया था ना, तो ठंडक के लिए उनको साक्षात भगवान स्वरूप मानकर। और वो रहते कहाँ पे हैं? कैलाश। हिमालय में, जी, कैलाश में, जी, जहाँ पे कितनी ठंड होती है, काफी। बहुत। जो भी लोग कैलाश में जाते हैं ना, यहाँ से कितने ब्लैंकेट वो ओढ़ के जाते हैं। शिव जी तो दिगंबर रूप में वहां पे रहते हैं, जी, समझ जी, गए? तो हाँ, वो है। सो बाय, फिर गंगा का जल जमीन पे गिरा, और फिर भागीरथ मुनि लेड गंगा नदी, जहां पे उनके पूर्वजों के जो ऐश थी, जी, वहां पे, वहां पे उनको टच होते ही उनका मोक्ष हो गया, एंड देयर सोल असेंडेड टू हेवन। जी, और ये इतना ही नहीं, द सेक्रेट रिवर गंगा में जो भी कोई व्यक्ति, वेरेवर शी टच, जी, एवरीथिंग बिकेम प्योर। जी, वो आज खाली भी सगर राजा के पुत्रों को नहीं, जहां जहां पे वो गई वो सभीयों को वो उन्होंने मोक्ष दे दिया। इसीलिए गंगा नदी का महत्व काफी है। जी, वो कभी उसमें आप देखोगे ना, जो अगर प्योर गंगा नदी का पानी है ना, तो उसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, लंबे टाइम तक लोग घर में रखते हैं। इट इज सो हाँ, प्योर। हाँ, यस, यस। तभी गंगा जल तो काफ़ी हमारे यहाँ पे इट्स कंसिडर्ड लाइक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड आई आई गेस हम जब हम छोटे थे और हम ट्रिप पे जा रहे थे गंगा के पास, तो मेरी नानी ने 10 बार ही बोला था कि गंगा स्नान ज़रूर करना, सारे पाप धुल जाएँगे और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो आई थिंक आई कैन रिलेट टू दैट हियर विद द स्टोरी एज़ वेल। अ, और उसमें वेन एवर यू टेक अ बाथ, यू मस्ट बिलीव इन योर माइंड कि तुम्हारे जी, पाप धुल रहे बिल हैं। रहे हैं। बाकी तो आप 100 बार गंगा स्नान करोगे ना, तो भी नहीं होगा। द जी, फेथ इज इंपॉर्टेंट, जी, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट योर माइंड। माइंड इज एवरीथिंग, रिमेंबर, जी, गौतम बुद्धा said we are all mind, यस, ट्रू। right? So we have to engage our mind into the spirituality, into the higher spirit. जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा कहा आपने। तो ये थी भगीरथ की स्टोरी है और अभी हम बात करते हैं कि जो शिवजी का रामायण में क्या-क्या रोल था? क्योंकि मुझे ये तो पता है कि जो राम थे वो भी शिव भक्त थे, जो रावण थे वो भी शिव भक्त ही थे। तो शिवजी का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है रामायण में, तो आप बताएँ कि उनका रोल क्या-क्या है रामायण में? तो राम जी के अवतार जो विष्णु भगवान ने लिया, उसके मेन कारण में ही शिव जी है। द रीजन इज लाइक दिस, देयर आर मेनी रीजंस, ओके, आई विल टेल यू वन ऑफ द रीजन। जी, वन ऑफ द रीजन ये है ना कि अ, शिव जी ने एक जगह पे तपश्चर्या कर रहे थे, हिमालय के एक गुफा के अंदर। जी, सो द थिंग इज, उस समय पे तारकासुर नामक एक राक्षस था। जी, सो ही गॉट अ बून कि जो शिव जी का जो पुत्र होगा ना, उसी को वही उसको मार सकेगा, और नोबडी एल्स कैन किल हिम। ओके, अभी सती माता ने तो आत्मा, अपना जो आत्मार्पण कर दिया था दक्ष के यज्ञ के अंदर, जी, राइट? सो इसके लिए तारकासुर स्टार्टेड टू, basically he gained the control of over all the lokas, जी, and he was sure अभी तो शिव जी को शादी नहीं होगी तो पुत्र कैसे होगा ना, जी, तो वो तो दूर की बात है। सो फिर पार्वती माता का जन्म हुआ, वो भी तपश्चर्या कर रही थी, मगर शिव जी तो है एक, मगर वो पार्वती माता की तपश्चर्या को बेसिकली देखते भी नहीं थे। ही वॉज इन डीप मेडिटेशन, लाइक शिवा इज कनेक्टिंग योर माइंड टू योर सोल, दैट इज जी, शिवा, शिवो अहम, शिवो जी, हम। आई एम द शिवा मीन्स आई एम, माई माइंड इज नाउ प्योर, आई एम कनेक्टिंग टू माई सोल। जी, नाउ उस स्टेट में जब भी व्यक्ति रहता है ना, और ये तो परमात्मा है ना, जी, सो नाउ इंद्र वांटेड हिज इंद्रासन बैक।
So Okay. Indra started playing the game. जी. Okay? That is the problem. Lesson here is whenever we always believe in God, we say, please Bhagwan, ye karna na, but we do not trust him. We take the things in our control. So जी. Indra also decided to do that. So what he thought was his best friend is Kamdev Okay. और स्वर्ग की अप्सरा है किसी ने किसी को कामदेव के साथ में वो सो दे एंड कामदेव एंड रति स्टार्टेड टू डू डांस जी. वहां पे शिव जी के सामने और वसंत भी आ गई वहां पे जो वसंत ऋतु भी नहीं थी तभी जी. तो शिवजी ने तो अपनी इंद्रियों पे विजय पा लिया है ही हैज कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस सो फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ही इज अबाउट लस्ट जी. above anger and above everything. So he treat शिव जी के पास राक्षस भी जा सकते हैं और देवता भी जा सकते हैं सभी को इक्वली वो देते हैं अच्छा व्यक्ति भी जा सकते हैं और बुरा व्यक्ति भी जा सकते हैं शिव जी के पास एंड ही डजंट डिफरेंशिएट जी. he treats them equal that is what it means so उन्होंने तीसरी आंख खोली the eye of equality Okay. थर्ड आई इज आई ऑफ इक्वालिटी Quality. सो जब भी इक्वालिटी मतलब यहाँ पे वसंत है पृथ्वी पे दूसरी जगह पे वसंत क्यों नहीं है जी. राइट सो ही डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ कामदेवा भस्म कर वहां दिया पे उन्हें. भस्म कर दिया जी. और फिर वहां पे शिवजी मीन्स उनको जीवतदान तो दे दिया बाद में मगर कहा कि यहाँ पे जहां पे मैं तपस्या कर रहा हूँ वेर एवर द पॉइंट आई एम डूइंग मेडिटेशन जब तक मेरी नजर है वेर एवर आई कैन सी और एनी ह्यूमन कैन सी टिल दैट पॉइंट ऑन दिस प्लेस 360 डिग्री जी. बाउंड इन द रेडियस कामदेवा's इफेक्ट विल नॉट बी देयर विल बी नलिफाइड Okay. हैंस यहाँ पे जो भी कोई आएगा उसको कामदेव का इफेक्ट उसको होगा ही नहीं Okay. उसके सामने कितनी सुंदर अप्सरा आ जाए फिर जी. भी So once upon a time, Narad Rishi he has forgotten about this part actually. So he Okay. was looking to do some place to do tapasya. When he came there, he found peace. आप भी काफी मंदिर में जाती है ना तो कोई कोई जी. मंदिर में आपको ज्यादा पीसफुल लगता है. पीसफुल लगता है ऐसा एंड लगता है कि सच इधर ही रहूँ मैं हाँ थोड़ी जब देर. बस वहां पे ही रहो अभी. कोई कोई जो सिद्धपीठ होती है ना वहां पे तो जरूर ऐसा होता है जो जी. ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया होता है वो जी. सो ही फाउंड अ पीस देयर एंड ही वेंट इनटू मेडिटेशन फिर इंद्र को डर लगा अभी क्या होगा मेरा क्या नारद ऋषि मेरा आसन लेना चाहते हैं जी. सो ही सेंड हिज फ्रेंड कामदेव अगेन ओके. मगर वहां पे तो आशीर्वाद था ना जी. कि यहाँ पे कामदेव का असर नहीं होगा जी. so he Narad Rishi wasn't affected at all. ओके. So after he completed his tapasya, he got ego हुँ. because Indra सामने आया और कहा कि आप महान हो, you are great. I sent my friend Kamdev, still it did not affect you. Like, जी. so he got ego. So जी. he thought he is now Shiva. Like Shiva has won Kama, I have also won Kama. काम. So he went to Lord Brahma and said, I want over Kama. Brahma said, ठीक है, प्रशंसा की. And then he went to Lord Shiva, said that I want Kama. Lord Shiva said, this is very secret thing. You shouldn't tell anybody. तूने जी. मुझे कहा है तो ठीक है. हम जी. लोग बच्चों को कहते हैं ना और किसी को मत बोलना. जी. तूने मुझे बताया है तो ठीक है मगर और किसी को मत बताना. बट शिव जी को तो पता ही होगा कि उन्हीं के बून He की was वजह playing से. a trick, na. जी. He was playing a trick, na. ओके. So he said, but मुझे कह दिया वो कह दिया. जी. But don't tell to Lord Vishnu. ओके. Don't tell to Lord Vishnu. जी. Because if he Vishnu knows that, he'll be jealous of you. ओके. Okay. So उसको भी so he thought
शिव जी को मेरी सफलता से खुशी नहीं हुई। कभी-कभी हमें भी ऐसा लगता है ना, दिस गाय इज़ नॉट Jealousy. हैप्पी बिकॉज़ ही इज़ जेलस। आई गॉट प्रमोशन एंड ही इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज़ ही इज़ जेलस। जी. So he went to Lord Vishnu anyway. Okay. So he told to Lord Vishnu, Lord Vishnu, like Lord Shiva, I also won over Kama, Mm. like Lord Shiva. And जी. Lord Shiva praised, Lord Vishnu praised him. Wow, nice smile. And then नारद ऋषि लेफ्ट वहां पे अपनी ही ईगो के अंदर। अभी विष्णु मायाधिपति है, जी. शिव जी भोलेनाथ है। जी. विष्णु माया के अधिपति कौन है? विष्णु। इसके विष्णु. लिए उनका काम क्या है? दुनिया को सस्टेन करने का काम जी. विष्णु का क्यों है? क्योंकि वो मायाधिपति है। उन्होंने जी. अपनी माया रची जी. और माया से उन्होंने एक नगर का निर्माण किया। ओके. उसका नाम, वहां पे नगर का जो राजा था उसका नाम था शिलानिधि। ओके. उसकी पुत्री थी श्रीमती। ओके. अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, श्रीमती और कौन सी देवी का नाम है? शायद पार्वती जी को ही कहते लक्ष्मी, हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, ओके, लक्ष्मी जी को लक्ष्मी कहते जी, हैं। हाँ, हाँ। श्रीमती का नाम। अभी राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा। देखो, जी, हमारे पूर्वज जो थे ना, जी, वो हमेशा स्वयंवर रचाते थे। मतलब कि किसको चूज करना है कन्या, वो खुद डिसाइड करेगी। जी, वो लोग डिसाइड नहीं करते थे, नहीं। कन्या का चॉइस हक होता वाज़ था। हाँ, चॉइस वाज़ वुमेन्स चॉइस। इसके लिए जब भी विवाह होता है ना, तो जी, उसमें लाइक सीताराम, जी, विवाह के बाद में हम लोग पत्नी के पीछे पति का नाम लिखते हैं ना, मगर पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले पत्नी का नाम आगे आता आगे था ना। जी, हाँ, अभी तो हम नाम के लिए लिखते हैं, राइट? हाँ, मगर ओरिजिनली जो भी होता है ना, किसी को प्रणाम करना हो ना, सीताराम, जी। राइट? राधे और श्याम, राधे श्याम, जी, या तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं, पहले लक्ष्मी लक्ष्मी जी नारायण। का नाम है। जी, फिर सेम वे हम जब भी उनका पुत्र होते थे ना, तो हम क्या कहते थे? पार्वती नंदन। उनके बेटे हाँ, आप मॉम से आइडेंटिटी है, ऐसा। मॉम से आइडेंटिटी है ना, जी, करंट पार्वती में शायद नंदन, राधे और कौंतेय कहते हैं उनको। राधेय, जी, कौंतेय, जी, राइट? और जी। फिर कृष्ण को तो यशोमती नंदन, यशोदानंदन, जी, यशोदानंदन, देवकी नंदन, या कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय क्यों है? क्योंकि कृतिकाओं ने उसको पाला था। ओके, इसके लिए वो अपनी माताओं कार्तिक से जाने जाने जाते हैं ना। जी, सो उसका स्वयंवर रचाया। सो नारद ऋषि उस नगर में आए, हुँ, शिलानिधि राजा के नगर में। तो जब भी कोई नगर में कोई ऋषि आते हैं ना बड़े, तो जी, राजा उनको महल में आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक बुलाते। सो ही वाज वेलकम इनसाइड द पैलेस। सो जब भी कोई ऋषि आते हैं ना, तो अभी भी मैं भी लोगों के घर में पूजा करने के लिए मैं जाता हूँ ना, जी, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं जाके पंडित जी को प्रणाम करो, राइट? जी, यू नो दैट, राइट? सो या लाइकवाइज वो तो देवर्षि है, जी, साधारण ऋषि भी नहीं है, देवर्षि है। तो जी, कहा कि बेटी श्रीमती, तुम इनके प्रणाम करो। और फिर कहा कि आप तो ब्रह्मर्षि है ना, तो जी, आप मेरी पुत्री का भविष्य देख के बताओ, उसको कैसा वर मिलेगा? जी, तो नारद ऋषि ने देखा उसके सर के ऊपर से, कहा उसको तो भगवान विष्णु और शिव जैसा वर मिलेगा, अतिशय सुंदर होगा और काफी शक्तिशाली होगा, उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। न ज्ञानम, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर, जी, in terms of weapon, but he हुँ, got attracted to Srimati. Then जी, he wanted to marry her. So ओ what he did was, he knew his limitation. See, Narad Rishi knew his limitation.
Okay. जी, So he knew that he doesn't have a body like those strong kings, you know. He जी, is ascetic now, sannyasi hai, right? जी, So he went to Lord Vishnu's mhm, Vaikunt Lok. So he told Lord Vishnu, Prabhu, I want to talk to you in private, because he was sitting with goddess Lakshmi. So जी, sure, they went to some private area and said, you know, I want to marry now. जी, I saw a girl. Her name is Srimati. She's जी, very pretty, जी, but you know me, right? I am ascetic. मुझे I need a like your look, जी, and you are most handsome, beautiful God. जी, So I need your look. Can you give me your look? So Lord Vishnu says, you know, don't worry. I'll do whatever is in your best interest. He did not say I will give you. या He said, जो I will do आपके whatever in your best interest. Like doctor treats the patient, I will जी, treat you. I will do for you. I am your doctor. That's why you came to me, right? जी, जो आपके परम हित में है, वो ही मैं करूँगा, ऐसा कह दिया। ऐसे कहते हैं. और जी, आपको आपका जो परम हित लगता है ना, हुँ, डोंट वरी. सो जी, भगवान विष्णु क्या किया ना, सो ही गेव हिम हिज बॉडी लुक्स, बट फेस मंकी का दे दिया. हुँ, So whenever he was seeing his face, he could see his face as Lord Vishnu, ओके, वो but माया Maya thi. But जी, he others could see him his body as of Lord Vishnu and face of monkey. ओके, So he was very pleased. Now he went to the kingdom of King Shilanidhi to marry जी, Srimati in Swayamvar. हुँ, उसके साथ में शिव जी के दो सेवक भी गए, राइट. ओके, So सब लोग, everybody, all the people in the king's court looked at Narad Rishi and laughed at him. हाँ, भगवान जैसा शरीर वाला और बंदर जैसे मुंह वाला कौन व्यक्ति है. जी, सो श्रीमती आई, वो हार लेके सभी के पास गई. नारद ऋषि के पास आई, उन्होंने उनको लगा कि मेरे गले में डाली, उन्होंने सर भी आगे किया, मगर जी, वो चली गई. जी, अचानक सभी राजाओं के पास में से होके चली गई. अचानक डोर खुला और जी, वहां पे स्वयं विष्णु स्वयं पधारे, क्योंकि जी, श्रीमती के साथ कौन विवाह कर सकता है? विष्णु, स्वयं लॉर्ड शी इज़ लक्ष्मी, हाँ, विष्णु. तो श्रीमती ने उनके गले में, she put the garland in Lord Vishnu's neck, and Lord Vishnu married, and right away, immediately took Srimati away जी, without taking permission of the king Shilanidhi. जी, He just left. ओके, विवाह हो गया ना, स्वयंवर है, and Srimati also left. Now Narad Rishi became agitated and angry. He thought he was conned. जी, Lord Vishnu cheated him. He जी, went to Vaikunt Loka and became angry and cursed him. As you give him, because those two Lord Shiva's Sevaka जी, told Narada, your body is like Vishnu, but face is of monkey. That's why she did not marry you. आर यू? And you have been conned. So he went there, told Vishnu, as you give me the form of monkey, you will have to incarnate on earth. जी, And you made me suffer जी, separation from my to be wife. जी, You will literally feel separation from your योर wife, जी, own wife. And to get her back, you will need help of monkeys. ओके, Then his anger went down. जी, And then Lord Vishnu told him, did I say I will give you the body? What you wanted? Did I say yes? What did I tell you? I'll do everything in your best interest. इंटरेस्ट, Like doctor treats patient. And at that time, you were suffering from lust, जी, which you claim you conquered your lust. हाँ, Now, sage Narada feel ashamed. जी,
Sage Narada feel ashamed. जी, So, thus, Lord Shiva's tapas in the cave of Himalaya and sage Narada doing tapascharya there. जी, And Lord Shiva advised him not to tell to Lord Vishnu, help Lord Rama to come on earth. जी, And that there is one more thing. Like you know that Ravana was devotee of Lord Shiva, जी, right? जी, So Lord Ram need to perform the do the puja of because he need to install Rameshwaram. जी, He did made the Shivalinga and he need to do the Pratisthapana. प्राण One प्रतिष्ठा, of the Ramayana, I, I don't remember exact name of the Ramayana where this thing comes, but he looked for the knowledgeable priest in जी, Shiva Agama. जी, In Shiva Agama, he जी, could not find anybody else. And ओके, somebody told him there is only one priest, you will find it, but he जी, will not come. Who जी, is that? Ravana खुद himself. रावण, हाँ, So खुद रावण ही, Ravan came जी, and he brought Sita also and then told you will be going back because to do the Pratisthapana, you need to do with husband and wife. You cannot do जी, alone. Like जी, Graha Pravesha needs to be done by both couple, जी, husband and wife. जी, Okay. So uh, uh, Ravana did the Pratisthapana of Rameshwar जी, Lingam. And when you do Mahashivaratri Puja, there most temple will do Mahanyasa Purvakam Rudrabhishekam. जी, Mahanyasa Purvakam. So most of them do use Bodhayana Prayoga in जी, South India. But there is one Ravanokta Mahanyasam also, which is even longer than that. Okay. ओके, So Ravan was a big devotee of Shiva. जी, And then after the everything was done, puja was done. जी, So Lord Rama has to give the dakshina, right? जी, Because you cannot do you when the priest comes to your home, you जी, have to give him dakshina. जी, And that also whatever he says, जी, because according to his wishes. जी, So he asks for the Lord Rama asks for dakshina. So Ravana says, you don't have anything. I know you are a king of Ayodhya, but जी, right now you don't have anything. You cannot give me anything. And really, I enjoy doing a puja of Lord Shiva. So I cannot take anything for that. जी, Then Lord Rama said, if you don't take it, my puja will not succeed. जी, My puja will not succeed. So one of the version says that okay, so Lord Rama asked, "What do you want?" So he said, "In so Ravana says in my dakshina, I only want come soon and give me moksha." जी, मोक्ष ही माँग लिया उनसे। उन्होंने मोक्ष ही मांग लिया था. So Lord Rama did also pratisthapana of Rameshwar Lingam. जी, Now, as you said, Lord Rama used to worship Lord Shiva, and Lord Shiva used to worship Lord Rama. जी, And this is at Adi Bhautik level. Do you know what is Adi Bhautik level? जी। शायद हमें 1-2 पहले स्ट्रीम्स में ही मुझे समझा वो क्या है। आदि भौतिक इज़ एट फिजिकल लेवल लाइक यू एंड मी आर। It's a user interface. In जी, terms of any software engineers who are listening, it's a user interface. That जी, is Adi Bhautik level. When you look into the different components, you understand how it works. Try to understand. Sometimes you do not understand how it works. जी, So that is Adi Daivik level. जी, When you think everything is electronics, it is Adhyatmic level. जो देख नहीं सकते। Everything is electronic, which is like the power that goes inside, you जी, know. So that is all Adhyatmic level, because at Adhyatmic level, the difference between all the gods vanishes. जी, Everything is Parabrahma. जी। ये रामदास जी ने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट डज़ द बेनिफिट्स ऑफ बेथिंग इन गंगा बिगिन? जैसे ऋषिकेश हरिद्वार है या उसके भी ऊपर जाना चाहिए देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और द हायर वन इज़ इट लाइक द हायर वन गोज़ द प्योरर द वाटर इज़ ऐसा है क्या? Man changa to kathroट में गंगा, there is one saying. So
basically uh, wherever, if you I just said, right, wherever her water passed, जी right, wherever her water passed, she purified everything. जी She purified everything on the way. जी So you can bath in Rishikesh, Haridwar, Dev Prayag, Karna Prayag, Allahabad, which is now Prayagraj, which जी is the original name Prayagraj. If you take a bath in Prayagraj, or even at Kolkata, जी Bihar also, because Ganga river passes everywhere, right? जी So it is, the Ganga water is very pure. जी Water is लाइक very pure. कहीं पे भी हो वो प्योर ही है सभी जितना जगह पे प्योर ही है. ओके ओके ठीक Okay, है so you will get benefit is in the mind. You have to think that the even one drop, see, that's why whenever we do puja, we just get one drop of Ganga water and mix it in our kalash, and then जी we sprinkle in the home, thinking everything is Ganga jal. Even somebody is having their last breath, we put a drop जी of Ganga jal, हाँ even that could be mixed in his water, but then everything becomes Ganga jal. जी सो गंगा जल जिसमें भी है ना, वो गंगा जल ही है. जी बिल्कुल ओके एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, जी that at adhyatmic level, hari haryo vedam nasti, that is told by sage Hemadri, like there is no difference between hari and hara, that is adhyatma level. जी गॉट इट। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था रामदास जी। मुझे भी ये क्वेश्चन था एक्चुअली कि इज़ इट लाइक दैट? क्योंकि हमेशा ऐसे लगता है कि माउंटेन्स में जहाँ ऊपर-ऊपर जाओ वहाँ पे पानी शायद और प्योर होता है, बट गंगा तो गंगा है। तो कहीं पे भी प्योर है और थैंक्स अ लॉट पंडित जी टू फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। अभी बात करते हैं शिव जी के तीसरी आँख के बारे में व्हिच इज़ वेरी ड्रेडेड क्योंकि ऐसे लगता है कि जब तीसरी आँख खुली है तब भस्म हो गया है कोई या कोई प्रलय आ गया है ऐसे लगता है। तो ये शिव जी की जो तीसरी आँख है ये दूसरे किसी भी भगवान में नहीं दिखाई देती है। तो ये इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि ये क्या है एग्ज़ैक्टली? तो शिव जी की जो तीसरी आंख है ना, जो सी वी सी द थिंग्स बाय अवर टू आईज, जी, हम ये दो चक्षु से देखते हैं. एक बार क्या हुआ है ना, एक मैंने, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जी, कोई संत हैं उनके मुख से सुनी है, मैं वही कोट अनकोट कर मैं आपको बताता हूँ कि वृंदावन में एक बार दो व्यक्ति गए वहां पे. जी, तो वहां पे वहां पे जो भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वहां पे दर्शन किए. तो दर्शन करके बाहर आए, तो जो उसमें से दो व्यक्ति, फ्रॉम दोस टू पीपल, द अदर पर्सन से, कैन यू वेट फियर फॉर अ सेकंड, से व्हाट, व्हाई, आई वांट टू गो बैक जी, एंड डू द दर्शन अगेन. He said, ओके, why, we just had a darshan. जी, So what did he say? इन आंखों से जी, कितना दर्शन करे, जितना हो सकता था उतना किया, मगर प्रभु की जो ग्रेस है, इट इज इनफाइनाइट, जी, राइट, अनंत है. जी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता. जी, सो हम कितना देख पाते हैं, तो हम ये दो आंख है ना हमारी, वो इट हैज गॉट अ लिमिटेशन. जी, वी सी विथ मोह माया. हम रास्ते में भी जाते हैं ना, तो कोई अच्छा व्यक्ति, पुरुष शास्त्री हमें दिखते तो हम एक समय के लिए देख लेते हैं. जी, या तो कोई अच्छी चीज दिखे जिससे, तो भी हम देख लेते हैं, राइट. या तो अच्छा सा मोर पिच मिला या कोई कृति मिली तो भी हम लोग देख लेते हैं. क्यों? कि अवर आईज आर ट्रेन टू लुक एट द ज्योमेट्री. अगर जी, हम अच्छे फोटोग्राफर है ना, तो आप फोटो लेने के लिए ऐसे, अगर ऐसा पानी का तट है ना, तो आप वहां पे फोटो लोगे, या तो सीधा जाता है वो फोटो अच्छी आएगी आपको, अच्छी दिखेगी. जी, आप ऑफ सेंटर लोगे, तभी अच्छी दिखेगी सेंटर के जगह पे. सो अवर आईज आर ट्रेन टू डू दैट, क्योंकि मोह माया के ऊपर किसी के भी है, जी, मगर शिव जी को ऐसा नहीं है. जी,
वो जो तीसरी आंख है ना, वो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू अवर पिक्चोरिटी ग्लैंड। ओके। वहां पे एक ज्ञान चक्षु है। जी। एवरीबडी हैज द थर्ड आई, मगर हम कभी खोलते नहीं है ना। जी। थर्ड आईज मीन्स क्या? थर्ड आईज मीन्स टू रिमूव द डिफरेंसेस, जी। to think everything is the one. जी। So Shiva's third eye is often depicted as a symbol for Lord Shiva's devotee to keep, to develop the sight of knowledge. Jnana Chakshu जी। कहते हैं. It represents the ability to perceive beyond the physical world. जो जी। यूजर इंटरफेस से ज्यादा अंदर डिजाइन डॉक्यूमेंट में जाके देखो क्या क्या कंपोनेंट है. जी। That our two senses eyes can see. जी। This is Adhyatmik eye, where everything is one. There is no difference between Purush and Stri. That's why हम लास्ट के पहले जो स्ट्रीम थी, ईश्वर जी ने एक कहानी बताई थी ना, जी। राइट, कि कि व्यास जी के पुत्र जब भी जन्म होके जब भी गए, तो उनके वो देखकर जो वहां पे जो स्त्रियां जो नहा रही थी बिना कपड़ों के, उनको कोई शर्म नहीं आई, जी। राइट। मगर जैसे व्यास जी आए तो उनको शर्म आएगी, उनको उन्होंने कपड़े ले लिए। जी। तो व्यास जी ने पूछा कि मेरे पुत्र जब भी आया तो आपको शर्म नहीं आई और मुझे देख के शर्म आई। तो उन्होंने कहा आपका पुत्र शिव स्वरूप है, जी। स्वयं शिव है, और आप में सांसारिक माया है। जी। आपका पुत्र पे सांसारिक माया टच भी नहीं है, कि वो साक्षात शिव स्वरूप है। जी। सुखदेव जी साक्षात शिव स्वरूप थे, जी। राइट। तो जी। वो अध्यात्म का जो है ना आंख, जी। सभी को एक रूप से देखना, जी। दैट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज, थर्ड आई। रिजेक्शन ऑफ डिजायर। सो थर्ड आई इज ऑफन सीन एज अ सिंबल ऑफ रिजेक्शन ऑफ डिजायर। जी। काम दहन कर दिया था ना। जी। काम दहन कैसे होता है ना, कोई किसी कामदेव को जला नहीं दिया था। जी। जो विचार उत्पन्न हो ही नहीं, जी। हो ही नहीं सकते, वो सभी को एक समान रूप से देखते हैं, बिकॉज वी आर हाफ अ क्रोमोसोम अवे फ्रॉम चिंपांजी। सो वी टेक दैट रिप्रेजेंटेशन एज शिव जी ने उस कामदेव को जला दिया, बट जी। शिव जी ने वासनाओं को जला दिया, कि जी। आगे किसी को भी उनके उनकी इच्छा शिव जी जी। पे लागू ना हो। जी। तो वो इट्स अ सिंबल ऑफ rejection of desires. जी। Okay? And Shiva was able to burn his desires like kama and desires, ichha. Because our wishes, what we are is our mind. And wherever desire comes from, mind. If you remove mind from the equation, जी। you get moksha. मोक्ष। Because like onion, you remove the all layers, one Yes. after another after another. What is inside? Nothing. Nothing. Yeah. When nothing is left, what is that? Your soul, Paramatma. You merge with the infinite. जी। And it's also the yogic dimension. ओके। So, from a yogic perspective, opening the third eye represents the perceiving the dimension जी। which is higher than us. जी। Right now, ये आंखों से हम वही देख सकते हैं, whatever we can see. We cannot see the other dimension. जी। Like there are many sages are meditating in Himalayas जी। without any form, जी। without any body. जी। That the dimension, that is the yogic dimension. ओके। ओके। So that once at when all the compulsions of physical drop away, जी। leading the state of limitless of जी। being, you will feel you are not bound in this body, you are फ्री। infinite. जी। And destruction of Maya, Shiva third eye signifies the destruction of माया का। world of Maya. जी। It provides the faculty to distinguish what is right and what is wrong. Vivek. It जी। gives you power of discrimination. Vivek. जी। So बिल्कुल। third eye जब भी शिव जी की खुलती है ना, जी। it has got all Vivek. जी।
मेक सेंस। ये जो श्री माता शक्तिपीठम है नॉर्थ कैरोलिना का, वो लोग पूछ रहे हैं कि शिव जी का जो फोटो है वो ब्लू कलर में क्यों दिखाया है यहाँ पे, वेयरएज ही इज गोल्डन इन कलर, थाम्र अरुणम। Yeah, you are. This is a right. This is very good question. ये जो फोटो है ना, if you want to blame anybody for this photo, it's at AI. So I gave the parameters. I wanted like third eye to be open up. जी, So, and I wanted to make that the eye to be prominent. If and I wanted to give it red, everything was tamra varna, then it will not be easy to distinguish. So it is that you can say it's artistic vision, I would say. जी, जी, ओके। तो ये And बहुत forgive me for that. जी, But because in this, it looks like शिवा ने तीसरी आंख खोल दी है. होली है। जो जो चाहिए जो दिखाना है वो एग्ज़ैक्टली कैसे ड्राइंग उसका बनाए, तो आई थिंक द वे वी टेल मशीन इट इट क्रिएट्स फ्रॉम दैट, बट इतना एग्ज़ैक्ट बताना तो बहुत ही शायद मुश्किल इतना होगा। इतना इतना and then those AI tools basically use their own brain, right? जी, For them, like Vishnu is like blue color. So Shiva, Vishnu, उन्होंने सभी को अध्यात्म लेवल पे डाल दिया. शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है. जी। ओके। अ, अभी थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं शिव जी जो है उनकी भी फैमिली है। जैसे पार्वती जी है उनकी पत्नी, और उनके 2 बेटे हैं कार्तिकेय और गणेश जी। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए कहाँ पे मेंशन्ड है? सो शिव जी के इसमें एक मंत्र है, ये कालिदास जी ने लिखा है. जी, वागार्थ विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो. उसमें ये है कि शिव और पार्वती दे आर इनसेपरेबल जी, और जगत के माता पिता हैं. लास्ट लाइन में पार्वती परमेश्वरों में कालिदास जी का जो ज्ञान है संस्कृत का वो आता है, बट दिस इज नॉट द स्ट्रीम अबाउट to show how much I know Sanskrit, so I will omit that, but we will just concentrate जी, on Rudra Samhita. So ये जो शिव पार्वती की जो फैमिली का जो है ना, where it was established, that part is described in a part called Rudra Samhita in Shiva Puran. ओके। देखो इसमें शिव जी का बराबर स्किन कलर आ गया है. पार्ट ऑफ रुद्र संहिता इन शिव पुराण. दिस इज जी, कनेक्टेड टू द किलिंग ऑफ डीमन तारकासुर जो हमने बात की थी ना. और जी, दिस पार्ट ऑफ रुद्र, और जिसमें गणेश जी और कार्तिकेय का जो जन्म होता है ना, जी, वो पार्ट ऑफ रुद्र संहिता फोर्थ खंड. आई थिंक दिस इज टाइपो हियर. जी, फोर्थ सेक्शन, जी, कुमार खंड जी, बेसिकली. फोर्थ पार्ट कुमार खंड में है. सो जिसके अंदर उनका युद्ध होता है. देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन तारकासुर एंड कार्तिकेय, एंड फाइनली he kills him, and that day is also known, that was I think skanda sashti. Mata Pitham can correct me if I am wrong. And that day big temple will celebrate Sura Sanharam. Actually is Asura Sanharam, but because he killed the Tarkasur on that day. So there is a big festival on Kartik Shukla Shashti in most temples, ओके। उसी most दिन Kartikeya temples. So that is connected to killing of the great Tarkasur. जी, और आपने पहले बताया कि तारकासुर ने वो ही वर माँगा था कि आपके बेटे से ही ओनली योर सन कैन किल मी। तो Only your son can kill me. And to, I mean, जी, Tarkasur is not like ordinary. I did not say him great. Like, see, Ravan also great ना. जी, वो ऑर्डिनरी, अगर वो महान नहीं होते तो कोई भी उसको वो कर देते थे ना. खाली रावण को हराने वाले ज्यादा लोग नहीं थे. एक जी, तो राम जी थे, दूसरा वाली थे, और आई थिंक कार्तिवीर्य सहस्रार्जुन थे. जी, वो तो उसने तो ऐसे ही दबोच के ले लिया था रावण को. सो आई मीन दे आर नॉट ऑर्डिनरी, राइट? सो आई मीन जिसको राम ने मारा वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, राइट? जी, जी, बिल्कुल।
राइट। ओके, और तो जिसको कार्तिकेय ने मारा वो भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता ना, काफी दिन तक जी, युद्ध चला था। जी। तो और एक ये भी क्वेश्चन है कि शिव जी जो है उनको तो आदि योगी कहा है और जो पार्वती है उनको आदि शक्ति कहा है। तो इनके बारे में थोड़ा और बताएँ? सो बेसिकली क्या है ना, शिवा रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। जी, जैसे शिव को देखते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया के, वाइल शक्ति इज डायनेमिक पोटेंसी दैट मेक्स दिस एलिमेंट कम टू लाइफ। जी, सो शिवा शक्ति इज एनर्जी। मुझे ये उठा के पानी भी पीना है ना, तो मुझे जी, शक्ति चाहिए। जी, मुझे कुछ पेन पकड़ के लिखना भी है ना, तो जी, भी मुझे शक्ति। शक्ति चाहिए। मुझे कुछ सोचना है, कुछ काव्य लिखना है, इफ आई वांट टू राइट समथिंग, जी, आई नीड थिंकिंग पावर। जी, To buddhi is also power. जी, So if you look into the Devi Mahatma, we say Ya Devi Sarva Bhuteshu, and then Shakti Rupena Sanstita, Buddhi Rupena Sanstita. We see all of those things because जी, that is the power, that is the source where the our energy comes from. जी, Okay, जी, and from and by that way, I know that I read somewhere, I could be wrong, I'm not an DNA specialist, but uh, I read somewhere that the child gets the energy DNA from the mother, not from the father. हुँ, Father keeps it with himself, only mother passes on. So you इंटरेस्टिंग। got it from your mother, your mother's mother. So even जी, I got from my mother, her mother likewise. So जी। that is the power of mother here, from like. ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही पंडित जी, मुझे एक रेफ़रेंस याद है जब मेरी शादी हुई थी, तो वो जो शादी कराने वाले थे वो कह रहे थे कि अगर बेटी की शादी कर रहे हो तुम यू आर मेकिंग श्योर ऑफ नेक्स्ट 42 या 24 जनरेशंस आई फॉरगॉट दैट नंबर। 72 generation. 72 जनरेशंस बट अगर मतलब बेटे की शादी इज़ डिफरेंट देन बेटी की शादी बिकॉज़ बेटी की शादी से तुम 42 जनरेशंस या 74 जनरेशंस को तुम अफ़ेक्ट कर रहे हो तो शायद इससे रिलेशन हो This सकता is है। the relation to that जी। actually. जी, Okay, this क्योंकि is the the relation. lady is the one passing down the Their energy. DNA, the जी, energy DNA, and the ओके, intellect DNA is also mother passes ओके, basically. चलो So अच्छा है। from the you should be proud. From a एग्ज़ैक्टली metaphysical point of view, जी, they correspond to the two essential aspect of the one. जी, क्योंकि शिवा रिप्रेजेंट द मस्कुलिन प्रिंसिपल, which जी, represent the abiding aspect of God, and feminine principle like Shakti, like she represents energy, the force which acts, the manifested, the world and life itself. जी, When the energy was created, जी, when the world was created, the जी। universe was created, Lord Shiva and Shakti had to do first Tandava dance. Yeah, I we talked about that in the last stream. Remember, we जी, talked about it, because Shiva and Parvati, they are inseparable, जी, and with that combined the whole universe, because they need the energy, and where the energy will come from, जी, her. So basically the energy you will be passing forward, the who is the source of that energy? Shakti शक्ति। herself. जी, जी, Got it? यस, So represents the energy. So Shakti is also the cosmos जी, itself. She is the embodiment of the energy, जी, dynamism, and जी, motivating force behind all action. जी, So that is what Shakti is about. In जी, the material universe, जी, whatever actions, what we see, it's all about that. Even if you think about the Big Bang, to make it happen, you need the energy. जी, In next stream, we are going to have one of my friend called Mr. Ramakrishna Warrior. He's going to talk about Nataraja, and then the sun. They are doing the Large Hadron Collider. That's about the Big Bang. Like how Shiva
and is connected to it, so that thing also, to do that happen, Shiva Shakti is important. इम्पोर्टेंट। तो आदि योगी और आदि शक्ति, जैसे आदि का मतलब यहाँ पे है कि द वेरी Adi फर्स्ट means the beginning, the सोर्स। first one. जी, And then Adi Yogi means Shiva is always immersed. He is not into his body form. जी, So he thinks this body is vessel, remember. जी, So he thinks he is the Paramatma, he is the supreme soul. And जी, when you think always in that mode, you are जी, a yogi. जी, When you detach yourself, Shiva is always detached. जी, Shiva is always detached. He is जी, never attached to anything. That's why it's जी। called Adi Yogi. आदि योगी और ये जो है वो आदि शक्ति To है। do the meditation, you need Shakti. जी, Otherwise, एक जगह पे बैठना 5 मिनट के लिए तुम सोच के देखो, it is very difficult. नो इट You नीड्स अ know, लॉट ऑफ पावर। you need lot of power. Even if you work, you sit for an hour, then थोड़ा खड़े होके थोड़ा चक्कर मार के आते हैं ना। ये तो जी, शिव जी तो हजारों साल तक एक ही जगह पे बैठकर मेडिटेशन करते हैं ना। सो जी, दैट इज द थिंग। सो शिवा is cannot be separated from Adi शक्ति। Shakti. जी, So the path of enlightenment is the path of bringing together mind and consciousness together, जी, because mind cannot be destroyed, जी, and we have to engage the mind into consciousness. See, जी, remember, do not fight the forces. You जी, cannot remove the mind. Whatever life you have, this life, whatever your memories are there, it will go into the subconscious mind. जी। And then if you do meditation, you can retrieve all of your past life's memory back through deep meditation. वेरी इट माइट नीड लाइक अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डीप एफर्ट। Very deep effort. So जी, mind cannot be destroyed. जी, Mind is inert, like jnana is adi, and like anadi, जी, jnana is anadi, likewise ajnana is also anadi. जी, Remember, जी, mind cannot is also anadi, cannot be removed. जी, जी, बिल्कुल। Okay? तो ये हमने सारी बातें कर ली शिव जी के बारे में और शक्ति के बारे में, और भी बहुत सारी हो सकती है, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस आवर लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ महाशिवरात्रि, क्योंकि महाशिवरात्रि अभी इज़ अपकमिंग। हम लोग वो भी शेयर करेंगे कि कहाँ पे कौन से दिन पे सेलिब्रेट करना है, अगर आप यूएस में हैं या इंडिया में हैं, बट उससे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ महाशिवरात्रि की, इस दिन क्या-क्या हुआ था? So origin of Mahashivratri is very old. जी, Okay, different says different thing. The night of Lord Shiva is said to have. Uh, so एंड last time we have told na जी, we did say na ki when the beginning of the universe for the first time, in when the one kalpa ends and the another one starts, Shiva destroys everything, जी, right? And to recreate, right? So they do the dance, Tandava dance, you जी, can say. And then the dance of the, you will see like the physics also, जी, right? So that is all Tandava is basically the power of Shiva and Shakti. जी, So it's the dance of primordial creation, जी, preservation, and destruction. जी, That is that dance that Shiva did on Mahashivaratri. Okay, mhm, started, and it for long time. On जी, the same day, he also drank the poison that came out while पूजन churning the ocean. The जी, marriage of Lord Shiva and Parvati. However, there are different sects believe, different agamas believe different dates, जी, but most temples will perform Shiva Parvati Kalyanam जी, on Mahashivratri day. जी, ओके, Okay. So because Purusha is Chaitanya and Prakriti, the nature, that's what you should see the marriage of Shiva and Shakti. जी, Overcoming darkness and ignorance, because Chaturdashi Amavasya, simple. जी, एंड रात को 4 प्रहर की पूजा जरूरी है, लाइक पहले प्रहर से ज्यादा दूसरे प्रहर में, उसके ज्यादा तीसरे प्रहर में, उसके ज्यादा चौ चौथे प्रहर में. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. And जी, then you need to keep full night vigil with puja, bhajan, and kirtan. There was somebody asked me this question on Facebook, like in Australia, Mahashivratri puja started at 6 and finished by 9. He said, no, you have to do Chatur Prahar puja, means जी, the Prahara does not start at 6 p.m. It starts at
Sun. sunset, जी. and ends at next day sunrise. Sunrise. So you have to calculate the difference, जी. divide by 4. So each prahara is basically you need to do the puja, char prahar ki puja, bhajan, kirtan. You can do offer water on Lord Shiva, Bili Patra if you can. If you cannot find all of those things, जी. you can do Manasa Puja. You sit, close your eyes, and think there is a Shiva Linga in front of you, and you are visualizing it. You are offering, you are doing Rudrabhishekam. If you do not know any Veda mantra or any Puranokta mantra, you can just say Om Namah Shivaya. Very simple. जी. Om Namah Shivaya. जी. Because there is a Visarga after Sha, so it becomes double. Namah Shivaya, not Namah Shivaya. Namah Shivaya. जी. You can say Namah Shivaya, but Namah Shivaya is way better, जी. correct way to do it. And keep on offering the water in your mind. Nowadays in North America, you can get bilwa leaves, but if you can get it, visualize it जी. and offer. जी. Full night bhajan kirtan. जी. That's what how you should do the puja. जी. And fasting is necessary because why fasting? Because puja is kind of a yoga, one जी. of the yoga. And what is yoga means? Yoga ha chitta vritti nirodha patanjali yoga sutra. So controlling your mind and body. If जी. you are, if you have your stomach is full, no, then हम्म, you will feel sleepy. जी. And people call it I am in the yoga nindra, but it is not yoga nindra. जी। तो ये जो फास्टिंग है ये भी क्या सनसेट से नेक्स्ट डे के सनराइज़ होता है या पूरा दिन होता है? वो usually fasting, if you look at it, should observe from the start from the previous day. जी, जी। लोग क्या करते हैं ना कि 12 बजे के बाद हम पहले खा लेते हैं. हुँ, It is not 12 to 12. That is not the day. जी, Remember, you should start from the previous night to the next day sunrise. जी, And there are some rules we are going to discuss about that when to जी। break fast. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पहले तो बात करते हैं शायद इसके बारे में लास्ट टाइम भी किया था बट लेट्स आल्सो रिवाइज़ इट कि जो महाशिवरात्रि की जो तिथि डिसाइड होती है वो कहाँ से डिसाइड होती है? क्या है उसका सोर्स? वो ज्यादातर जो पंचांग के आगम है ना उसके ऊपर से होता है. वन ऑफ द आगम से अतः शिवरात्रि ही जी, सा निशित व्यापिनी ग्राह्या. जी। सो निशित काल व्यापिनी लेनी चाहिए. शस्तु रात्रे अष्टमो मुहूर्त इत्युक्तम. Eighth muhurta is based. What is eighth muhurta? Because the sunrise minus next day sunset, calculate the distance. That is called Ratrimana. हुँ, हुँ। So you divide them into 15 equal parts ओके, because there are only 15 muhurtas in the day, 15 muhurtas in the night. Each muhurta has got two gatikas. ओके। Okay. So the length of the gatika will vary जी, because where depending upon where you are. यू But आर या usually Shivratri comes in the time during the equinoxes, right? Time frame where the day and night are kind of similar. जी, Not always here, but जी, if you are on equinox, exact equinox, which will be like March 21st, जी, then it will be the all same. एग्ज़ैक्ट सेम हाँ, The name for equinox in Sanskrit is called Vishu. जी, But this is Sayana because this has to be Sayana because then only the day and night will be equal as per the Vishu, what we say. जी। So Astama Muhurta is exactly midnight. Mhm, And I have explained that this whole long shloka, people might not be interested. So let's go to the translation. Next slide. So the next slide will say the very detailed. Nishita Kala Vyapini is important. Nishit Kala जी, is 8th Muhurta of the midnight. राइट, जी, If it prevails both days, जी, full. If it like today also Ashtama Muhurta and tomorrow is also Ashtama Muhurta. जी, Or Ekadesha means one part today and one part tomorrow, not completely in Ashtama Muhurta, but part of it. Then take the second day because it does prevail to touch the Ashtama Muhurta, even for a second. जी, If it prevails completely on first day, जी,
if it prevails completely on the first day, जी, and one part which is like Ekadesha on second day, then first day, ओके, because it's prevailing on the first, but in same thing completely on the second day, and one part on the first day, then second day. But if it both prevail, जी, a little bit on this first day, little bit on that, डे, then you take the second day. ओके, If it जी, doesn't prevail on any day during जी, the eighth muhurta, then take the only second day. डे, ओके। तो ये जो है वो रूल टू फॉलो लाइक व्हाट एग्ज़ैक्ट तिथि टू फॉलो फॉर महाशिवरात्रि? Is Mahashivaratri Tithi is for Chaturdashi Tithi, Krishna Paksha Chaturthi. But of what? If जी, you look at the Amavasya month, which is more prevalent in Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, South India, pretty much. So that will be Amavasya month, means month will begin with Shukla Paksha and end with Krishna Paksha. In जी, that case, it will be uh, Magha Masa. जी, Okay, and the why it is called Magha Masa? Because on the Purnima of Magha Masa, there will be Magha Nakshatra, जी, basically. जी, But in case of Purnima in the North India, pretty much Hindi belt, where month ends in when month begins in Krishna Paksha उहुँ, and end in Shukla Paksha, जी, Purnima, जी, right? So in that case, it will be Falguna, ओ Krishna Paksha, Chaturdashi. Both are same, जी, जी, right? गॉट इट, जी, So that is the rule, and those are the months. ओके। तो अब बात करते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कौन से देश में कौन से डेट पे इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कौन से डेट पे आ रही है। तो पंडित जी थोड़ा इसके बारे में भी बताएँ। तो यूएसए, कनाडा और कैरेबियन, यूरोप, अफ्रीका, Africa, South America also, I would say, Middle East, जी, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Singapore, Malaysia, China, Russia. From that point, जी, from Alaska, I would say, जी, from Alaska till we say Perth, Australia, जी, it is March 8. ओके, And if you are in Brisbane, जी, Australia, Sydney, जी, Australia, Melbourne, Australia, Darwin, Australia, New Zealand, Auckland, or any other place in New Zealand, जी, Fiji, जी, or Japan, जी, it will be March 9th, ओके, 2024. So ओ that is how that date will be. जी। तो ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आप खुद ही पंचांग करता है तो आप ही से पता चल गया कि कौन से दिन पे है। एंड देन आल्सो ये महाशिवरात्रि का पारणा कैसे करना है? पारणा के लिए क्या है ना, दो नियम है. इफ चतुर्दशी एंड्स बिफोर थर्ड प्रहरा ऑफ द डे, तो जी, दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात्रि में 4 प्रहर होते हैं. जी, ओके, तो अगर वो 3 प्रहर के पहले समाप्त होती हैं, जी, then you have to end the fast after Chaturdashi. And why? Because you have to do your Pratah Sandhya, you have to do your what you call Amavasya Tarpanam. जी, Those kind of things you need to do it, and that you cannot do it with the filled stomach. You have to do upvas. Okay, जी, जी, so you have to fast, so that way you have to do it, and the fast after Chaturdashi ends. ओके, If Chaturdashi is more than 3 prahara, जी, then you have to do it before the Chaturdashi ends, ओ because चतुर्दशी का उपवास और चतुर्दशी का पारणा वो काफी नसीब वालों को ही मिलता है, ऐसा शिव जी कहते हैं. ओके, ओके, गॉट इट। तो ये हो गए महाशिवरात्रि के जो हमारे रूल्स थे वो सारे ही हमने डिस्कस कर लिए। अगर कोई और हमने आज सवाल बीच-बीच में भी लिए, जैसे ही लोगों ने पूछे हमने ऑलरेडी वो सवाल ले लिए। अगर किसी को कोई सवाल है इसके बाद भी
तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, हमें और लिखिए कमेंट्स में कि आपको क्या सवाल है, आपको और क्या जानना है हमसे, सो दैट वी कैन ऑल्सो क्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंगली। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चल के भी हमारे जितने भी लाइव स्ट्रीम है उसमें हमें हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्वेश्चंस पूछिए। और पंडित जी, वन फाइनल थिंग इज, नेक्स्ट टाइम आप फिर से बताएंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं 9th मार्च को? That will be 9th March according to the यूएस। USA year time. जी। 7 p.m. Pacific, 8 p.m. Mountain, 9 p.m. Central, 10 p.m. Eastern. जी। London will be Sunday morning. Uh, Next day will be like 10th morning, 3 a.m. India will be Sunday morning, 8:30 a.m. And as usual, my friends in Australia, New Zealand, we will post the date around 2 p.m. somewhere in जी। your place. So between 1 to 4 p.m. in New Zealand, Australia, Fiji. Anyway, so going to talk about, we have a guest speaker, Ram Krishna Warrior, जी। and he is a very knowledgeable person. He worked at ISRO हम्म, in the past, and he's going to talk about the Lord Nataraja and जी। the sun. You will see the sun Lord Nataraja in the sun, the laboratory, right? जी। So we are going to talk about that and importance of that. So you will see the this pretty much month we will be immersed. जी। We are immersed into the grace of Lord Shiva, and we will continue to be immersed in Lord Shiva. One more thing I want to tell is we are going to start astrology classes online. So those who want to join the classes, please send us the message. You can write in this YouTube comment that you want to learn in our videos, and we will enroll you. And then it will be on YouTube. So we will teach you the start with the Hindu basic Vedic astrology prediction part. Although mathematic parts, I don't think people will be interested more, but you will know how to make kundali, how to interpret the kundali, and all those kind of things. So if you are interested in knowing, please let us know and we will do it. We will also going to do more sessions, and after that we are going to have another guest called, his name is Mr. Vikas Agarwal. He also is, I mean, does a lot of meditation and all, and he is going to talk about his upcoming book also. जी। So we have a good plans. And then, by the way, we also keep posting YouTube shorts on Bhagavad Gita quizzes and Ramayana quizzes. Please do watch our quizzes and share, जी। give comments, whether you like or do not like. Give hands up, hands down, whatever, and give us the जी। comment and share with your friends. Most important thing, sharing is caring, जी। that we learn in the school. So please do share. And with that, धन्यवाद. बहुत बहुत Om धन्यवाद। Namah Shivaya. Radhe Radhe. जी।